हेलो स्पेस मिस्ट्री लवर्स, आज का वीडियो स्पेस से रिलेटेड कुछ बुक्स के बारे में है। अगर आप एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो इन 5 बुक्स को ट्राई कर सकते हैं। दीज आर माइंड ब्लोइंग इंटरेस्टिंग बुक्स, सो लेट्स बिगिन। नंबर 1 पे जो किताब आती है उसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू द ब्लैक होल्स बुक थ्योरेटिकल कॉस्मोलॉजी पर बेस्ड है, जो इंग्लिश फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1988। हॉकिंग ने ये किताब बिगिनर रीडर्स के लिए लिखी है जिनके पास फिजिक्स की कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में हॉकिंग ने नॉन टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करते हुए यूनिवर्स की स्ट्रक्चर, ओरिजिन, डेवलपमेंट और इवेंचुअल फेट के बारे में लिखा है, which is the object of study of astronomy and modern physics. He talks about basic concepts like space and time, basic building blocks that make up the universe such as quarks and the fundamental forces that govern it such as gravity. इसमें कॉस्मोलॉजिकल फिनोमेना सच एज बिग बैंग और ब्लैक होल्स के बारे में भी लिखा है। उन्होंने 2 मेजर थ्योरीज को भी इसमें डिस्कस किया है, विच आर जनरल रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स, जिन्हें मॉडर्न साइंटिस्ट यूनिवर्स को डिस्क्राइब करने में इस्तेमाल करते हैं। Finally, he talks about the search for a unifying theory that describes everything in the universe in a coherent manner. ये किताब दुनिया की बेस्ट सेलर रह चुकी है, जिसकी 25 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। 2017 एडिशन में इस किताब के अंदर 12 चैप्टर्स हैं। हॉकिंग ने यह भी कहा है कि हिस्टोरिकली कॉस्मोलॉजी की स्टडी फिलोसॉफिकल और रिलीजियस इंसाइट्स के लिए होती थी। फॉर इंस्टेंस, टू बेटर अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ गॉड और इवन वेदर गॉड एग्जिस्ट एट ऑल। पर्सनली मैं आपको ये किताब रिकमेंड करूंगी क्योंकि मैंने खुद ये किताब पढ़ी है। नंबर 2 पे जो बुक आती है उसका नाम है कॉस्मोस। कॉस्मोस एक पॉपुलर साइंस बुक है जिसे एस्ट्रोनॉमर और पुलित्जर प्राइज विनर ऑथर कार्ल सैगन ने लिखा है। इट वाज पब्लिश्ड इन 1980 एज अ कंपेनियन पीस टू बी द PBS मिनी सीरीज कॉस्मोस अ पर्सनल वॉयेज, with which it was co-developed and intended to complement. Each of the book's 13 chapters illustrates one of the 13 episodes of the television series. Just a few of the ideas explored in Cosmos include the history and mutual development of science and civilization, the nature of the universe, human and robotics space exploration, the inner working of the cell and the DNA that controls it, and the designer and future implications of nuclear war. The book covers a broad range of topics comprising Sagan's reflections and anthropological, cosmological, biological, historical, and astronomical matters from antiquity to contemporary times. Shortly after release, Cosmos became the best-selling science book ever published in English language. और इसी के साथ Cosmos received the Hugo Award for Best Non-Fiction Book. नंबर 3 पे जो बुक आती है उसका नाम है Black Holes and Time Warps. Black Holes and Time Warps: Einstein's Outrageous Legacy is a 1994 popular science book by physicist Kip Thorne. It provides an illustrated overview of the history and development of black hole theory, from its roots in Newtonian mechanics until the early 1990s. Over 14 chapters, Thorne proceeds roughly chronologically, tracing first the crisis in Newtonian physics precipitated by the Michelson-Morley experiment, and the subsequent development of Einstein's theory of special relativity, and later Einstein's incorporation of gravity into the framework of general relativity. Number 4, Hubble Legacy. ये एक डेफिनेटिव बुक है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप पर बेस्ड है, which is written by noted astronomer Jim Bell. Looking deep into space, by definition, means looking back in time, and the Hubble Space Telescope can look very far back, including at stars, nebulae, and galaxies to millions, even billions of years पुरानी है. If there is a single legacy of Hubble as it turns 30 years old and nears the end of its useful life, it is this. It has done more to chronicle the origin and evolution of the known universe than any other instrument ever created. The legacy will not only feature the most stunning imagery captured by the telescope, but also explain how Hubble has advanced our understanding of universe and our very creation. Finally, जो नंबर 5 पे हमारी बुक आती है उसका नाम है The Damn and Haunted World. The Damn and Haunted World: Science as a Candle in the Dark is a 1995 book by the astrophysicist Carl Sagan and co-authored by Anne Druyan. इसमें दोनों ऑथर्स ने साइंटिफिक मेथड से ले पीपल तक को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, एंड टू एनकरेज पीपल टू लर्न क्रिटिकल एंड स्केप्टिकल थिंकिंग. They explain methods to help distinguish between ideas that are considered valid science and those that can be considered pseudoscience. Sagan ने समझाया कि साइंस नॉलेज की एक बॉडी नहीं है, बल्कि it is a way of thinking. Sagan shows how scientific thinking is both imaginative and disciplined, bringing humans to an understanding of how the universe is, rather than how they wish to perceive it. उन्होंने कहा कि साइंस किसी और सिस्टम के मुकाबले ज्यादा अच्छे से काम करती है, because it has a built-in error correcting machine. The Damn and Haunted World provides many arguments about our society that will always remain relevant. आज के लिए बस इतना ही. Thanks for watching. See you soon in new video. तब तक के लिए stay tuned.